So put today's day and date. Today is Thursday. Now we are continuing with depreciation. Now I told you there are two methods of recording depreciation. Okay, charging depreciation जब बोलेंगे तो it is SLM method and the WDV method. But now I'm talking about the two methods of recording depreciation. What are those two methods? One is where only one account is maintained, only one account maintained. And that is we have already done. And that is when you have the asset account. Okay, you put all the entries at one place in the asset account. Okay. Now, the second method of recording depreciation is when two accounts will be maintained. Two accounts maintained. So here we have two accounts, obviously, A and B. So here it's only A account. Here we've got A is the asset account, of course, and B is the provision for depreciation account. Keep on writing. Provision for depreciation account, right? Or which you call accumulated depreciation account. Okay. So far, copied. Okay. Now I'm first telling you how when one account is maintained, what all entries we put. The entries would be same. Okay. Calculations will be same, everything will be same, but you have to split it into two parts. Some entries will go to asset account and some entries will go to the provision for depreciation account. Okay, am I clear? So everything will remain same. The only thing is you have to split the things into two parts. Some entries will go to your asset account, some entries will go to your provision for depreciation account. Okay. Okay. So now, first I'm telling you the asset account, which we have already done. Okay. So just quickly draw a format. Don't think that you already know why to copy this. Okay. Because with the help of this account only, I'm going to tell you what we are going to do in the provision for depreciation account and asset account when it is maintained separately. Okay. So this is what we have done so far. And that is we have the asset account. And here the asset account is maintained at what you call as original, the written down value. Okay. Or the depreciated value. Written down value. WDV कह सकते हो इसको, है ना? The method of depreciation, method of charging depreciation may be SLM. But this asset account is maintained at WDV, the written down value, the depreciated value. Okay. Now this is the debit side and the credit side. So we used to put to balance brought down. Asset account ka balance, asset ka balance, jo bhi hamare hai. And then if we have purchased any new asset to bank, purchase of new asset, we used to put, right, on the date of purchase. And then on the credit side, we put whenever the asset balance goes down. And on the debit side, whenever the asset balance goes up. Now, asset balance will go down because of depreciation, because of sale of the asset. So if at the year end, I have not put the date column, sorry, I'll put the date column also. So we have the date column and date column also. So at the year end, bachon, we used to charge the depreciation. So since I told you that we have got only one account, so obviously year-end depreciation will be charged in the same month. Okay, so year-end pay, we used to charge depreciation by depreciation according to the amount of time we have used that asset for. Suppose I purchased an asset in the beginning of the year, I'll depreciate it for the entire year. I have purchased it in between the year, then I'll depreciate only for that particular amount of time, right? So that proportionate depreciation we used to calculate, and then we used to calculate by balance carried down, right? This is how we used to do, and a double time. So those who have not started depreciation yet, please start doing it. Okay. And then the next entry at the year beginning of the second year will be to balance brought down of the asset. Okay. Now, suppose I'm selling some asset. Okay. If I'm selling an asset, then on the date of sale, what all entries do we pass? Okay, now one of you will have to tell me what all entries do we pass on the date of sale. Yes, please raise your hands.
Those who can tell me on the date of sale, what entries do we put on the credit side? Yes, Navya. Ma'am, by bank, by P&L account, and by depreciation for that particular time we have used it that year. Perfect. By bank, the selling price. By P&L, if it is loss. So by P&L, if it is loss, if it is profit, then we'll put to P&L. It will be either of them if profit on sale of the asset. Okay, so either this will come or this will come, either of them. So I'm putting an asterisk. Okay, P&L loss, and one more entry Navya said, and that is by depreciation. The current year depreciation on the asset sold till the date of sale. Okay, so ये वाला जो depreciation है ना, ये बच्चों year end depreciation है, year end depreciation. Okay, and then we used to put these three entries. I hope everybody remembers this. If not, please try to memorize it now. On the date of sale, we pass three entries. By bank, the selling price, P&L account loss, and we know the formula for calculating the profit or loss on the sale of the asset. We take the original cost minus accumulated depreciation, gives us the book value of the asset on the date of sale. That we compare with the selling price and we get profit or loss, right? Now, in the year of sale, at the year end, जब year end आता है, so we have to charge the depreciation, year end depreciation on the remaining assets, right? So by depreciation on remaining assets, that will be charged. And then of course we'll calculate by balance carried down and a double line. That is how we used to prepare the asset account when we are maintaining only one account. So what we've done is we've put all the entries at one place only. There is no, we are putting everything in the same asset account. So this thing I hope is clear. If not, copy it once more so that you'll memorize. ठीक है? क्योंकि ये जब क्लियर होंगी एंट्रीज तभी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कौन सी एंट्री मूव कर रहा है, बिकॉज द एंट्रीज विल रिमेन एग्जैक्टली दीज ओनली बच्चों. ओके, बट सम एंट्रीज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस अकाउंट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है ना? जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, ये जो ईयर एंड डेप्रिसिएशन होता है ना, क्योंकि now we will maintain depreciation accounts separately. So this year end depreciation, we are going to put in the depreciation account in the second method. Okay, Ashmit, you have joined very late, beta. We were just doing the first method of depreciation, which we have already done. So this is what we've already done. But with the help of this, I'm telling how to make the provision for depreciation account and asset account at original cost when we have to maintain two accounts. So year-end depreciation will be in the accumulated depreciation account or what you call as provision for depreciation. ठीक है, एक तो ये change आएगा. दूसरा, जो ये current year का depreciation है ना, ये भी हम कहाँ पे करेंगे? इसको भी हम accumulated depreciation account में लिखेंगे. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया. ये तो बहुत सिंपल है. ये दोनों जो डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज हैं, ये हमारी rather than on credit side of asset account, we'll put them on the credit side of the provision for depreciation account. ठीक है ना? यहाँ के राइट हैंड साइड में ना आके ये दोनों एंट्रीज कहाँ जाएंगी, और ये वाली भी डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट, ये चली जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन अलोन, राइट? So in that case, I'm showing you the account now. We'll be making two accounts simultaneously. But okay, we'll be making two accounts simultaneously. Okay, okay, no problem, Ashmit. We are starting the new part now only. Okay, now see, bacho, I'm telling you the second method of recording recording depreciation with the help of two accounts. So we'll prepare two accounts simultaneously. Okay, maybe what you will be doing is, what I'll suggest is the best way to present it is in your register, left hand side पे आप बनाइए asset account, right hand side पे आप बनाइए provision for depreciation account, और working सारी नीचे show कर दीजिए. So take a double sheet. अभी तो नहीं, अभी तो मैं working note तो होगा नहीं हमारे पास, because I'm just trying to explain the entries. So when we do the questions, keep your left hand side first half for your asset account, right hand side वाला first half for provision for depreciation account, और दोनों के नीचे working notes बना. That is the best way of presenting, but please don't keep on giving the working notes first and then come to the main solution. No.
सबसे ऊपर जब आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर 7 यू आर डूइंग, उसके साथ में सोल्यूशन दिखना चाहिए बच्चे। ये नहीं कि यहाँ से वर्किंग नोट चल रहा है 1.5 पेज तक और फिर आपका असेट अकाउंट है। नो, डोंट डू इट दैट वे। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग क्वेश्चंस, you have, when you're putting properly answer number 7, so उसके आगे वो आंसर शुरू हो जाना चाहिए, main body of the answer. Now here we are going to prepare 2 accounts, so I'm simultaneously preparing 2 accounts. One is my asset account and one is my provision for depreciation account. ठीक है, अभी के लिए आप ऊपर नीचे बना सकते हो सिंगल शीट में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग्स नहीं है। सिंगल शीट में आप ऊपर नीचे बना लीजिए, we just have to put the entries. ओके, सो पहले अकाउंट का सबसे पहले तो हम नाम लिखे, ये बना रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हम बना रहे हैं असेट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे असेट अकाउंट आपका WDV पे नहीं चलता है, यहाँ पे असेट अकाउंट आपका चलता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि असेट अकाउंट यहाँ पे बना ओरिजिनल कॉस्ट पे, यहाँ पे WDV पे नहीं बनता। सेकेंड इज वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जिसे हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों ही नाम है इसके, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ही बात। अब इनकी साइड्स भी लिख दीजिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सो दिस इज द डेबिट एंड द क्रेडिट, डेबिट एंड द क्रेडिट। यहाँ तक आया समझ में? कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हमने असेट अकाउंट नॉर्मल अपना बना लेना है। सो यू हैव द डेट कॉलम, द पर्टिकुलर्स कॉलम एंड द अमाउंट कॉलम, just like a usual asset account. The format remains the same: date, particulars and amount, date, particulars and amount. और ये ही सारे कॉलम्स हमारे accumulated depreciation account या provision for depreciation account में भी आएंगे। ठीक है, हेडिंग्स लिख दीजिए, date, particulars, amount in rupees, date, particulars, amount in rupees, date, particulars, amount in rupees. I don't have space, so I'm writing it like this. ठीक है, उसके बाद में असेट अकाउंट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड में, because asset account has an original debit balance. This is very clear. Now please try to understand, we have done this provision and reserves chapter. So provisions are shown on which side? Please send me the answer on chat. Each one of you send me on Zoom chat the answer. My question is, provisions are shown on which side of balance sheet? ठीक है, provisions are shown. Please, everybody, send me the answer. Provisions are shown on dash side of balance sheet. Yes, please quickly send me the answers quickly. Navya, balance sheet has got a credit and a debit side, beta. Correct, Anya. Correct, Arna. Anvesha, correct. Quickly, send it quickly. A और L की टर्म्स में भी आप आंसर लिख सकते हो, A और L. Please send the answer as this. Choose कर लो. Okay. ये बैलेंस शीट. Okay, I have written it on the screen. Okay, Navya. Hello, Priyanka. Priyanka, beta, the question which you have to answer on the chat is, provisions are shown on which side of the balance sheet? Okay, provision and reserves chapter we have done. So you have to write and send on chat on which side of balance sheet. Quickly, बच्चों, इतना time लग रहा है A या L type करने में. Right, Ashmit. Right, Rehan. Okay, okay. Good. So everybody knows. Everybody has given me the correct answer, and you know that
It is shown on the liability side of the balance sheet. Perfectly okay. Now, liabilities have what kind of balance? Liabilities का basic nature क्या होता है? Debit या credit? Please send the answer. Liabilities का basic nature क्या होता है? Debit or credit? D or C? D for debit, C for credit. Send me quickly on the chat. Okay. Nice. Everybody is giving the correct answer. So everybody knows that liability side of the balance sheet, or if we're talking about the liability side of the balance sheet, they have a basic credit nature. Okay, so they have opening credit balance. ठीक है, तो हमने क्या conclude किया कि provision for depreciation जो है हमारा एक provision है ना, ये किस साइड शो होगा बैलेंस शीट के? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो होता है। और अगर जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो होता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। Okay, so it will have basic credit nature, so it has got credit balance. Okay, so now when we put to balance BD on the asset side, the opening balance, similarly on the credit side of the provision account, we'll put the balance of the provision account. Okay, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? हम asset side का जो है वो ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं। असेट साइड ओपनिंग बैलेंस, असेट साइड नहीं, असेट का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। प्लीज राइट टू बैलेंस बीडी क्या लिख रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन हम कहाँ लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोविजन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ओके, नाउ Kavya, you have joined so late, beta. We are doing the second method of recording depreciation, Kavya. And that is when we maintain two accounts, Kavya. One is asset account, one is provision for depreciation account. So two separate accounts are maintained, right? So now we are making the entries simultaneously in two accounts. So far, we have learned that we were maintaining one account only. Okay, now quickly, Kavya, make the format of the asset account. Okay, Kavya and Priyanka, make the format of the asset account, date particulars amount, and provision for depreciation account, date particulars amount. Okay, and what we have done is the first entry is to balance brought down, wherein we put the opening balance of the asset, and the entry in the provision for depreciation account is by balance brought down on the credit side, the opening balance of the provision. ठीक है, उसके बाद देखिए, whenever we purchase new asset, we'll put on the debit side of the asset account to bank, which is very simple. We know that purchase को तो हम debit side of asset account, देखो ना, यहाँ पे लिखा था, मैंने अभी asset account बताया था, जब हम सिर्फ और सिर्फ only when we prepare one account, then we the purchase of new asset. Where do we put it? We put it on the debit side of your asset account. So this purchase will remain the same, यहीं आएगा. Up year-end depreciation. Okay, now I have told you in the class, those who had started the class from the beginning, year-end depreciation कहाँ जाएगा बच्चों? You have to write in 4-5 words where the year-end depreciation will go. Which side of which account? Year-end depreciation on assets will be debited or credited to dash account. Please fill up these A1 number 1 and number 2 and send me on chat. Year-end depreciation on when provision account is maintained separately. When provision for depreciation account is maintained separately. I have told the answer during the class. Okay, some have given the answer. Okay. Okay. So those who had attended the class from the beginning, not the latecomers, so they have given me the correct answer. The year-end provision on depreciation will be credited to the asset account. Okay, your answer is also correct, Priyanka, but we are talking with reference to depreciation, okay, and the provision for depreciation account. Okay, so that in that sense, over here it is not
fitting, right? We are doing depreciation chapter. So year-end depreciation on asset would be credited to asset account. Sorry, not asset account, to provision account. To provision account, sorry. Be credited to the provision for depreciation account. Had it been the asset account only being maintained, एक ही asset account रखा होता हमने without provision account, then it would have been credited to the asset account. But here, since we have got two accounts, so we are putting it to the credit side, the provision for depreciation account. Okay, so let's go back to our account and put the entry. So यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे by depreciation, जो year end depreciation होता है, ठीक है, by depreciation. This amount, instead of being over here, this entry is now transferred here. So this is the difference, one difference. Clear to all? Calculation will remain the same, like what we have been doing. Right, Kavya, is it clear? You joined late? Yes, ma'am. Okay. Atrey, yeah, I know you are text me. So what I'm trying to do, what we are doing is the second method of recording depreciation, where we have got two accounts. Asset account is kept separate. Provision account for depreciation account is depreciation account is kept separate. So we have got two accounts. The entries will of course remain the same. The calculations will remain the same, but what entry will go, that we are seeing. So opening balance of asset will go to the debit side of the asset account. Opening balance of the provision will go to the credit side of the provision account. And then a new purchase of the asset will go to the debit side of the asset account. Year-end depreciation will go to the credit side of the provision account. इतना copy कर लीजिए आप ट्रे फटाफट. Okay, keep on making it rough में बना लो फटाफट. Now, अब बच्चों ईयर एंड पे हम दोनों अकाउंट्स की बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है. तो ईयर एंड पे आपकी दोनों अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा. तो ईयर एंड पे दोनों ही अकाउंट्स में होगा. ईयर एंड पे यहाँ पे हम निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और डबल लाइन, डबल लाइन, ठीक है, ईयर एंड पे. और ईयर एंड पे इस तरह यहाँ पे भी एंट्री होगी. तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली टू बैलेंस कैरेट डाउन होगा ही होगी. टू बैलेंस कैरेट डाउन, या आप लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस करते हैं कैलकुलेट, वो एंड अ डबल लाइन. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है. ईयर एंड अभी यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट ओवर हियर? ओके. फिर beginning of next year we will bring down the balances, right? That is what we do. So beginning of the balances, year beginning, next year beginning, year beginning, वो ये बैलेंस कैरेट डाउन यहां से यहां आ जाएगा. क्रॉस एंट्री होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां तक भी क्लियर है? कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है. सिंपल बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है. तो ये ईयर एंड पे हमने बैलेंसिंग करते हैं, और ईयर बिगिनिंग में ऑपोजिट साइड एंट्री कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये यहाँ पे आ जाओ. ये तो क्रॉस एंट्री है ईयर बिगिनिंग पे बैलेंस उतारने की. अब आया डेट ऑफ सेल, ठीक है. डेट ऑफ सेल पे हमारी जो 3 एंट्रीज होती थी बच्चों, ओके. Remember, date of sale pe Navya had told 3 entries which we put in the asset account. See, look over here, bachcho. Year end pay, we put 3 entries on the credit side of the asset account in case of only asset account. 3 entries क्या होती थी? By bank selling price, by P&L loss, if any, and by depreciation for the current year till the date of sale. These 3 entries we used to have in the asset account. Asset account हमारे पास इकलौता अकाउंट था, तो उसी में सारी एंट्रीज हमने डाल देनी थी. अभी देखना पड़ेगा कौन सी एंट्री कहाँ जाए. तो आप देखें बच्चों, ये देखो बाय बैंक वाली एंट्री तो फिर भी यहीं पे आएगी. हाँ, चला गया मेरा सेटअप. हाँ, अब देखो ये वाली जो एंट्री है ना, डेट ऑफ सेल पे आ गई हूं मैं. तो डेट ऑफ सेल पे एंट्री कर लो. डेट ऑफ सेल, ओके. बाय बैंक वाली एंट्री तो यहीं आएगी एसेट अकाउंट में. पहले भी यहीं आती थी, अभी भी यहीं आएगी. डेप्रिसिएशन को अलग ही कर लो, ठीक है. तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? क्योंकि सेकेंड एंट्री हमारी होती है, 3 एंट्रीज होती है, बाय बैंक, बाय P&L
and by current year depreciation current. अब सोच के बताओ, मैंने बताया है क्लास में. Current year depreciation on assets sold will go where? Please, yes, my question now is all of you have to answer. Current year depreciation on assets sold on date of sale, DOS, date of sale will be credited or debited to which account? Please give A answer and B answer. Please fill in the blanks and send me the answers on chat quickly, Zoom chat. Current year depreciation on assets sold on the date of depreciation will be, I'm giving you the answer. I mean, you have to choose credit or debit. इनमें से एक आंसर आएगा. टू विच अकाउंट? हमारे पास दो ही अकाउंट है, एक तो असेट अकाउंट है बच्चों, है ना, और एक हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है. तो दोनों में से एक अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. आपको आंसर चूज कर लेना है. ठीक है, एमसीक्यू वो हो गया आपका चॉइस क्वेश्चन में. यू हैव टू चूज वन ऑफ देम. यस, okay, variety of answers. Just go through the previous slide if you have. Okay, I'm showing you the previous slide. एसेट अकाउंट में कहाँ जाता था जब हम सिर्फ एसेट अकाउंट मेंटेन करते थे, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्या क्या चेंजेस आएंगे. आई एम शोइंग यू दैट शीट. यस, कैन यू सी इट नाउ? Current year depreciation on asset sold when it is asset account, then it goes to the credit side of the asset account. But if we have maintained the provision account separately, then it will go to accumulated depreciation account. So please remember the year-end depreciation as well as the current year depreciation on the asset sold. Current year wala depreciation only, not the total depreciation, will be credited to the provision for depreciation account. तो इसके correct answers जो हैं, fill up ये लिख लीजिए अपने register में. Current year depreciation asset sold on date of sale will be credited to provision for depreciation account, या जिसका दूसरा नाम है accumulated depreciation account. Correct, Atri. Correct, Navya. ठीक है, शीतल asset account नहीं होगा, वो provision for depreciation account होगा. I hope it's clear now. So two depreciation, दो differences समझ में आ गए ना, एक तो year end depreciation और एक current year depreciation on the assets sold till the date of sale will be credited to the depreciation account. Depreciation account अलग से maintain किया है ना, फिर उसको वहां पे डालो. अब सबसे important चीज आ रही है जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं. ओके, दैट इज द प्लेस. ये सब कुछ याद रह जाएगा. ठीक है, अब जो पॉइंट बता रही हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू डोंट हैव टू मेक मिस्टेक इन. ओके, लिसन टू मी केयरफुली. आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट एंड देन वील पोस्ट इट इन द asset account. Write the statement first properly in a cloud. Total accumulated depreciation is transferred टोटल accumulated depreciation का क्या मतलब है? टोटल accumulated depreciation का मतलब है total depreciation on asset sold, total depreciation on asset sold till date of sale is transferred to asset account on date of sale. ठीक है, इसका impact क्या आएगा? That means this implies accumulated depreciation on assets sold will be
debited to provision account and shown on credit side of asset account. इसको बोलते हैं ट्रांसफर कर, है ना? तो accumulated depreciation account के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और असेट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और अमाउंट क्या होएगा? अमाउंट वुड बी टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड टिल डेट ऑफ सेल. अभी लिख लो, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आई टेल यू व्हेन वी मेक द अकाउंट विल बी क्लियर. अभी के लिए लिख लो अच्छे से, जो लिखा है वो लिख. Now total accumulated depreciation of course on asset sold. Okay, वो जरूरी है लिखना. Depreciation on asset sold. पूरा नहीं ट्रांसफर करते हैं, है ना? सिर्फ जो असेट चला गया उसका accumulated depreciation भी हम accumulated depreciation अकाउंट से हटा देते हैं, क्योंकि वो असेट चला जा रहा है तो वो भी हटाओ यहाँ से. तो आप ट्रांसफर करते कैसे हैं, लिख लिया ये सबने? ओके, नाउ आई टेल यू इन दी सी इन दी. Ma'am, can you please Yes. go back? I didn't complete writing it. Like this one. Yes. I didn't complete writing it. Okay, okay. Yes, please write it properly, very nicely on one single sheet. Just write this, because if you make this correctly, if you treat this part correctly in your question, everything else will be taken care of. क्योंकि बाकी सब तो सिंपल है, आ जाएगा एक दो बार याद करने से, एक दो बार देखने से. ये वाला पॉइंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं. Okay, ma'am. I've written. Done? हाँ, हो गया. नाउ सी बच्चों, इसका एंट्री कैसे करेंगे? देखो, अब ट्रांसफर एंट्री करनी है. यहाँ के डेबिट साइड से यहाँ के क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी, ठीक है ना? वैसे भी क्रॉस एंट्री, ट्रांसफर एंट्री जब होती है एक अकाउंट के डेबिट से दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में, या दूसरे अकाउंट के डेबिट से फर्स्ट अकाउंट के क्रेडिट, आपस में डेबिट और क्रेडिट. ओके, तो यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ पे सारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुआ है, तो यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे टू असेट अकाउंट डेबिट साइड में, और अमाउंट क्या लिखेंगे हम? accumulated depreciation on asset sold on date of sale. Date of sale पे ये एंट्री होगी. Accumulated depreciation on asset sold till date of sale, you can write, not on date of sale, till date of sale. Write it till. Accumulated depreciation on assets sold till date of sale. Date of sale तक जितना उसका depreciation हुआ, including the current year depreciation, वो हम अलग से working note में calculation कर लेंगे, और वो यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे. अड़ोस पड़ोस में ये देखो ट्रांसफर हो गया. ठीक है, यहाँ तो डेट ऑफ सेल पे यहाँ पे नाम आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. अमाउंट तो सेम रहेगा, नाम अकाउंट का बदल जाएगा. अपने अकाउंट में अपना नाम तो नहीं आता है ना. जैसे अगर असेट अकाउंट बना रहे हैं तो उसका एंट्री होएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा है तो उसका एंट्री होएगा टू असेट अकाउंट. जिसका अकाउंट बन रहा है उसकी एंट्री उसमें नहीं आती. Accumulated depreciation on assets sold till date of sale, we have transferred from here to here. Again, I'm not writing the same thing over here. The same, that amount will be same. है ना? वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, बस इतना है. और उसके बाद आपको दोनों अकाउंट्स की बैलेंसिंग कर देनी है. अगर कोई एसेट और यहाँ बाय P&L भी आएगा, वो तो आता ही है, वो तो एज इट इज आएगा. बाय P&L अगर जो लॉस हुआ तो, और टू P&L अगर जो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो.
ये डेट ऑफ सेल पे आ जाएगा एंट्री, ईदर ऑफ देम, ईदर गेन और लॉस, ठीक है। और फिर कोई नया एसेट खरीदा तो वापस टू बैंक से एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट में। आगे अब आता है सेकेंड ईयर में current year the depreciation on the remaining assets that will be credited of course to the depreciation account, वो तो हमें पता ही है, year end depreciation जो होता है on the remaining assets will be credited to the depreciation account, वो रखा ही इसलिए हमने। तो year end पे आपका by depreciation on remaining assets वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर बैलेंसिंग हो जाएगी, राइट। तो ये टू बैलेंस कैरेट डाउन इधर आ जाएगा और डबल लाइन, बस। और इसी तरह इसकी भी बैलेंसिंग कर लेंगे तो इसका आ जाएगा बाय बैलेंस CD एंड अ डबल लाइन। वो बैलेंसिंग तो अपने आप ही पता चल जाएगा आपको किस साइड होनी है, और हमेशा एक ही साइड होगी, उसके क्रेडिट साइड पे उसके डेबिट साइड। बोलो समझ में आया बच्चों? अब जैसे कोई से क्वेश्चन करोगे तब आपको और अच्छे से दिमाग में फिट होएगा। What you have to understand is that when we are maintaining two accounts separately, then your year-end depreciation will not be credited to the asset account, but it will be credited to the provision for depreciation account. Second thing, the current year depreciation on the asset sold will not be credited to the asset account, but will be credited to the provision for depreciation. Third, on the date of sale, the accumulated depreciation on the asset sold till the date of sale will be transferred from the asset account to, from the provision account to the asset account, from the debit side of the asset account to the credit side of the, from the debit side of the provision account to the credit side of the asset account. ठीक है, ये theoretical बोलने में हमें confusion होता है. Let's make the accounts with the help of a question, okay, and then we come back to it. चलो पहले तो question आ जाओ. I hope everybody has the book. Okay, we'll do one question of this provision account. Open your books, please. And one more thing, please confirm, all of you from your school teachers, that whether provision for depreciation account for WDV method, is it there in your syllabus or not? And second thing, disposal of asset account, that is in your syllabus or not? Because in many schools, these two topics are cancelled. They'll just delete it. So you can confirm, I'll be covering them over here in the class, but if it is not in your syllabus, then you can skip it altogether. Okay? If you want to do, you can do. If you don't want to do, you may skip. But just confirm from your teachers. Yes, yes, somebody, okay, fine. Definitely we'll be doing over here both the things, Kavya. Ma'am, can you send me the question? Yeah, I'm sending you the question. Thank you. Okay, so these are the two things which you have to confirm from your school in case you don't want to take that extra burden. अगर करना ही चाहते हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है करने में, तो फिर तो कर लेना, फिर confirm करने की जरूरत नहीं, ठीक है? So that is there. Okay, now I'm sending the question. Okay, question number 16 we are doing, बच्चों. Question number 16, page number 15.52. Paras brothers का question है ये. Some might be having old books, so either you can take it from the group or you can see it must be there in your old books also. I'm sending the question just. How clear is the picture? Just see and let me know if just clear, Aprati. Is it clear, Aprati? Picture? I think you can see it. Yes, ma'am, it is clear. Thank you. So now we're doing question number 16. जल्दी से आ जाओ बच्चों question number 16 पे. Okay, we first quickly read the question.
So following balances appear in the books of Paras Brothers. First, April pay, machinery account, provision for depreciation account. We know machinery account will be a debit balance opening and provision for depreciation account would be a credit balance opening. On 1st April 2022, they sold a machine for 8,700. This machine was purchased for 16,000 in April 2018. Prepare provision for depreciation account and machinery account on 31st March 2023. सिर्फ 1 साल का machinery account और provision for depreciation account बनाना है हमें. Assuming the firm had been charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. So यहाँ पे straight line method ये follow कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि 2 accounts prepare करने हैं हमें, asset account and provision for depreciation. Okay, clear? So can I draw both the accounts simultaneously? You can also draw both the accounts simultaneously. साइड में बना लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या मे बी ऊपर नीचे, बट ऊपर नीचे में लेंथ का पता नहीं चलेगा. वैसे एक ही साल का बनाना है तो बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं होंगी. सो अराउंड 7-8 लाइन्स विल डू. सो हियर आई एम मेकिंग दी असेट अकाउंट एंड उसके बगल में हम बना देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो दोनों का. डेबिट ऑन द क्रेडिट साइड, debit on the credit side, the date column, the particulars in the amount column, date particulars in the amount column. So Saturday we are having the test of SLM method, both the things, only asset account and when you're maintaining 2 accounts, asset account and provision for depreciation account. Okay. So here we're drawing what we're talking machinery account. So this is my machinery account and this is my provision for depreciation account. So just put the date, particulars, amount in rupees, date, particulars and amount in rupees, date, particulars and amount in rupees. This is the credit side and the debit side. Please put. Now I start making the entries. So asset account में आपका date को है 1st April 22, 1/4/22, to balance brought down. Asset account का कितना balance है? 80,000. So amount column में 80,000 debit side में. और provision for depreciation account में 1st April 22 को opening balance credit side पे होएगा. By balance brought down, the provision for depreciation account is 36,000. और यहाँ पे asset account जो हम रखते हैं वो रखते हैं बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट पे, एट ओरिजिनल कॉस्ट. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे मैम 80,000 माइनस 36,000. ओरिजिनल कॉस्ट इसका कितना था? 80,000. अभी तक कितना डेप्रिशिएट किया है इस एसेट को हमने? 36,000. तो 80,000 माइनस 36,000 इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1st April 22. अब क्या हो रहा है देखिए, क्या कह रहे हैं? ऑन दिस डेट दे हैव सोल्ड अ मशीनरी फॉर 8,700. अब आ गया डेट ऑफ सेल. तो डेट ऑफ सेल पे एंट्रीज करते हैं. 1/4/22 ही हमारा डेट ऑफ सेल है उस दिन बाय बैंक. तो यही आता है, रिमेंबर सेलिंग प्राइस, नव्या ने बताया था. क्रेडिट साइड ऑफ द असेट अकाउंट हमेशा विच एवर मेथड यू फॉलो, ये तो हमेशा यही रहेगा, वो है 8,700. ठीक है. अब क्योंकि हमने इसे ईयर बिगनिंग पे बेच दिया तो बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 0, है ना, क्योंकि साल के शुरू में ही बेच दिया. तो ये डेट ऑफ सेल को एंट्री हो गई. डेट ऑफ सेल हमारी 1/4/22 ही है. तो डेट ऑफ सेल को करंट ईयर में तो हमने इसको यूज ही नहीं लिया ना, असेट को. फर्स्ट डे वी सोल्ड इट, सो वी डिडंट यूज इट. सो करंट ईयर डेप्रिसिएशन वुड बी 0. लेकिन मैंने एंट्री कर दी ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ. ठीक है. अब आ गया कैलकुलेशन पार्ट. आइए वर्किंग नोट बना लें पहले. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट oblique loss on sale of asset. Obviously sale of asset कब होगा? डेट ऑफ सेल पे ही होगा. ओके. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ asset on date of sale. ओके. नाउ कह रहे हैं कि
एक पार्ट बेचा हमने 16,000 का, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था। तो ओरिजिनल कॉस्ट उसका कितना था? उस पार्ट का ओरिजिनल कॉस्ट था 16,000। कब हमने खरीदा है उसको? 1 अप्रैल 2018 को खरीदा था, 1/4/2018 को। और आज क्या डेट है? आज डेट है 1/4/22। तो हमने इसको कितने साल यूज किया बच्चों? हमने यूज किया इसको 1819, 1920, 2021, 21, 22। ठीक है ना? यही 4 साल यूज किया हमने। डेट समझ में आ रही? 1 अप्रैल को ही बेच दिया। ये जो डेट शुरू होती है, अगर मैं डेट्स के टर्म्स में लिखूं तो ये वाला फर्स्ट ईयर जो था वो था मेरा 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19 तक हमने यूज किया। 16,000 का था, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाना, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 16। दूसरा साल जो था हमारा वो शुरू हुआ 1 अप्रैल 19 से और खत्म कब हुआ? 31 मार्च 20 को। इस साल भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1600। फिर जो मेरा थर्ड ईयर है 2021, वो 1/4/20 से शुरू होके 31 मार्च। प्लीज जो मैं लिख रही हूँ वो सब कुछ लिखिएगा, डोंट ट्राई टू टेक अ शॉर्टकट, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। और फिर 1 अप्रैल 21 से लगा के 31 मार्च 22 तक हमने और यूज किया इसको, और तब 1600 डेप्रिसिएशन हुआ होगा। और फिर जब नया साल शुरू हुआ 22-23, उसके वेरी फर्स्ट डे 1/4/22 को हमने उसको सेल कर दिया, सोल्ड। तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो अब तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन पर एनम 1600, ऐसे 4 साल यूज किया, 1600 एक साल का डेप्रिसिएशन है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 6,400। दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड टिल द डेट ऑफ सेल। समझ में आ गया? 4 साल यूज किया, हर साल 1600 डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ वैल्यू का? 6,400। तो अभी असेट था 16,000। वी नो द बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज हाउ मच? Original cost minus total depreciation till date of sale, accumulated depreciation till date of sale। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? ओरिजिनल कॉस्ट था 16,000, उसको हमने आज तक 6,400 डेप्रिशिएट किया है, तो ये कितना बच गया बच्चों? 9,600 या 8,600? 9,615 प्लस 16, 9,600। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको कंपेयर हम किससे करेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो वैल्यू 9,600 है मेरे एसेट की, लेकिन हमें मार्केट में तो ये कम दे रहे हैं। मार्केट में हमें दे रहे हैं 8,700 की दे रहे हैं, तो ये तो हमारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1,900 का लॉस हो गया। 900, सॉरी 900 का लॉस हो गया ना, नॉट 1,900, 900। सो ये आ गया हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आई गई, कैलकुलेशंस हमें आती थी, अब हमको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है अकॉर्डिंग टू आवर एंट्रीज। सो दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 900। अब देखिए कहाँ कहाँ एंट्री जा रही है। ये है accumulated depreciation till the date of sale. This is accumulated depreciation on assets sold till date of sale. ठीक है, इसका ट्रांसफर एंट्री होएगा एक तो डेबिट साइड ऑफ द प्रोविजन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट। लॉस ऑन सेल आपका क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट जाएगा। चलो लिख लेते हैं ये, बाय P&L अकाउंट लॉस, क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट लिखना 900, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो 0 है। अब एक ट्रांसफर एंट्री करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर एंट्री करो, अब मैं इसका डिफरेंट कलर से कर रही हूँ। ट्रांसफर एंट्री ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल हमारी क्या है? 1/4/22 टू asset account. This is accumulated depreciation on asset sold. ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं हम, कितना अमाउंट कितना है? 6,400। 4 साल का डेप्रिसिएशन था, ये यहाँ के यहाँ आ जाता है, देख रहे हो एरो? ये इसमें ट्रांसफर डेट ऑफ सेल पे 1/4/22 पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे हम 6,400। बस इतना ही करना है। अब ईयर एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट निकाल लो, तो वो यहाँ पे आएगा बाय, ठीक है, ये हमारा सेल ऑफ एसेट का तो काम हो गया। अब ईयर एंड डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। कोई नया एसेट तो नहीं खरीदा है? नहीं खरीदा, चलो हो गया। सो यहाँ पे हम अब बाकी अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं।
by depreciation on remaining assets. तो remaining assets अब कितने हो गए? देखो पहले थे हमारे 80,000 के एसेट, उसमें से 16,000 का एसेट तो चला गया, तो ये कितना बच गया हमारा? 64,000 का एसेट बच गया। ठीक है, 64,000 के एसेट पे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 6400 का डेप्रिसिएशन और लग गया। ठीक है जी, और अब बैलेंसिंग कर लीजिए अकाउंट्स की, और कुछ एंट्री हुई नहीं है तो डू द बैलेंसिंग। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रांसफर एंट्री नाइसली, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ लगाते हैं, ईयर एंड का डेप्रिसिएशन यहाँ लगाते हैं। ईयर एंड कब आया? 31 मार्च 23, डेट डालना, ईयर एंड डेप्रिसिएशन है ये, यहाँ पे क्रेडिट होता है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो ये देखो इधर का कितना आ गया? 36 और 6 42,400 माइनस 6,400 तो आ जाएगा आपका 36,000 42,400। ये आ गया बैलेंस कैरेट डाउन प्रोविजन अकाउंट का। और इसी तरह असेट अकाउंट को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर का टोटल है 80,000, तो इधर का टोटल भी 80,000 होना चाहिए। तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन ईयर एंड पे 31 मार्च 23 को, ये आ गया आपका 64,000। देखो करके देख लो, और फिर वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। 1423 को इतना करके छोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन तो वहीं तक पूछा है लेकिन हमें बैलेंस उतारना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 1423 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन of the provision account 36,000. ठीक है, is it clear now? If not, try to revise it. I'll be uploading the recording also, but this is important. This method, I mean, this provision account is important, accumulated depreciation. Okay, and please start preparing for at least the SLM method. Okay, try to do some more questions. I'll also be doing with provision account. Of course, we just started. You might be having confusions that how we are, transferring the entries. But हाँ, एक question को अच्छे से clear कर लो कि कहाँ से entry कहाँ क्यों जा रही है ना? इस question में current year depreciation on asset sold था ही नहीं, because we sold the asset on the very first day. But कुछ questions में होगा जब आप beginning of the year asset नहीं sell कर रहे हो, जब आप middle of the year sell कर रहे हो, तो आपको वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा, पहले क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर टोटल डेप्रिसिएशन में वो ऐड होके तब वो ट्रांसफर होएगा। ओके, सो दिस वे ट्राई टू रिवाइज दिस एंड डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. You will definitely have confusion when you do the questions. Okay, so revise it once again, do it. I'll of course be doing many more questions of provision for depreciation account. Okay, so today I'll wind up the class over here, bachcho. Okay, Saturday be prepared for a test, okay, of SLM method, both the methods, right? Okay, then I'll wind up the class over here. Thank you, bachcho. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Ma'am, for Saturday, we